Hello and a very warm welcome to Rajya Sabha Television. You're watching Verdict 2015 with me, Frank Pereira. Let's begin with today's verdict headlines. BJP President Amit Shah launches scathing attack on Grand Alliance, says the BJP will bring tsunami of development in Bihar. After his younger son, Lalu's elder son, Tej Pratap Yadav, is to file nominations for Mahua constituency today. Rajya Sabha Television exclusive, BJP's Kirti Azad says that the BJP's main aim in the elections is to save Bihar from Jungle Raj. In the spotlight today, Bhagalpur, one of the oldest towns in the state, is grappling with lack of basic amenities. Well, BJP President Amit Shah will address party workers in Supaul today. Shah is presently in Bihar to hold meetings with party workers for districts going to polls on the fifth and final phase of elections on November 5th. On Sunday, he addressed a rally in Muzaffarpur, taking a swipe at the Grand Alliance. Shah said that the Bihar will return to Jungle Raj if the voters voted the RJD, JDU and Congress combined to power. He also told voters that if the BJP comes to power in the state, it will see a tsunami of development. Shah is presently holding a series of meetings and rallies in Bihar to energize the cadres ahead of the make-or-break elections. मुझे मालूम है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। बिहार में भाजपा की सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली है। 25 साल तक ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है और लालू जी के 15 साल तो बिहार आज तक नहीं भूला, आज तक नहीं भूला। आप फिर से जंगल राज चाहते हैं। 25 साल के अंदर कोई विकास का काम नहीं हुआ और अब कहते हैं कि एक मौका और दो तो हम विकास करेंगे। मित्रों, 15 साल तक जिस लालू का नीतीश ने विरोध किया, उसको कंधे पे बिठाकर वो मुख्यमंत्री बन गए। Joining me for a chat this afternoon on the program is Professor Naval Kishore Chaudhary. He's a political analyst joining me from Bihar. Professor, as far as the polls are concerned, we've seen that both the alliances, the Grand Alliance as well as the NDA, have upped the ante, and now we've seen a war of words coming to the fore as far as both the sides' leaders are concerned and what they're saying to the people in rallies. Yes. Go on, we can hear you. The both sides are now upping the ante, and it is very natural because the poll dates are nearing, and obviously whole lot of people from NDA, including top ministers, are in Bihar and campaigning for NDA, including the BJP President Amit Shah, which just now you heard him saying, referring to 15-year rule of Lalu Prasad ji as Jungle Raj. On the other hand, Mahagathbandhan leaders are also busy campaigning. Every day, Nitish Kumar and Lalu Yadav ji are addressing rallies, and it's very obvious that the fight is tough. Fight is going to be very tough. I can tell you from my experience of the ground situation. The most unfortunate thing which has taken place in the last few days is this: issues which should not have been flagged off in this election are now flagged off. Emotive issues. And I need not mention those issues, but you can't help telling these leaders that these emotive issues divide the society rather than unite them. Let us talk some substantive issues, substantive agenda for people to decide which way to go. But unfortunately, Bihar, as it is known for caste and religion-based politics, is veering around the same old emotive issue of caste, religion
division of the society into two polarized camps. This Indeed. is happening. You know, Professor, but A that's couple not of days going to you change, saw is it? Because how this is something that has been going on for a long time now, and political parties, both sides, of course, are going to take advantage of it and are going to make use of the weaknesses of the people. And you know, it's only going to get murkier as the days go ahead. I totally agree with you. Yes, it has happened in the past, and it is inherent in the socio-economic structure of Bihar. Yes, Bihar is a caste-ridden society. Yes, Bihar is a state which has not been able to dismantle remnants of feudalism, and feudalism is identified with identity politics. Identity politics is religion caste-based politics. But 10 years back, there was some departure from this identity politics when Nitish Kumar flagged off governance and development, make these two issues in the forefront. And Bihar had some dividends out of this in terms of development, in terms of improvement in law and order and governance. But unfortunately, we have come back, reverse the whole development. And again, even the Mahagathbandhan, even Nitish Kumarji, for whom I have respect, is talking of caste, mobilizing people on caste lines. This is rather unfortunate. And the other side, you know, is identified with religion-based politics. For instance, beefeating. Why should this issue be so important in Bihar? Unfortunately, Lalu Prasad ji referred to that. Now, BJP is taking advantage of that. BJPs cannot be the issue for a poverty-ridden state. Well, poverty incidence is very high. Unemployment is very high. Illiteracy is even here in a significant number. Ill health is a rule. So let us talk of certain fundamental issues like land reforms, like common school system, like improvement in health, rather than talking of beefeating and all that caste politics which divide us and which goes and to violate the very spirit of Indian Constitution. We believe in Indian Constitution. We believe in a composite culture. Right. We believe in a society which is in a midst of diversity, is a unified whole. And we believe in that kind of a democracy which is inclusive. But unfortunate as it is, both sides are taking full advantage of certain issues which divide rather than unite, and larger issues of poverty, unemployment, health issues, education issues get neglected in the process. It's rather sad. Professor, stay with us. I'm going to come back to you in just a bit to talk about another aspect that we are tracking here on the show as well. Of course, very clearly saying that we should focus more on some of the prime issues rather than focus on emotive issues. I don't see that happening anytime in the near future because both alliances are making use of these issues and trying to leverage their own interests. Former Bihar Chief Minister Lalu Prasad's elder son, Tej Pratap Yadav, who is contesting the election from Mahua constituency, will file his nomination today. A Yadav-dominated assembly constituency in Bihar's Vaishali district, Mahua goes to polls on October 28th in the third phase of the five-phase assembly elections, which begin from October 12th. Tej's younger brother Tejaswi Yadav filed his nomination papers for the upcoming Bihar State Assembly polls from Ragopur constituency on Saturday. Both Mahua and Ragopur are adjacent constituencies in Vaishali district, not far from Patna. Vaishali is considered an RJD stronghold. Lalu Prasad and his wife Rabri Devi, a former chief minister, won several elections between 1995 to 2010 from here. The polls for the 243-member Bihar Assembly will take place in 5 phases between October 12th and November 5th, with the counting slated for November 8th. Well, a lot is being said about the apparent discord within the Grand Alliance in Bihar. However, both party leaders have cleared the air and said that all is well within the Grand Alliance, and this issue has been raised by the opposition parties in order to divert attention. Here's more. सोनिया गांधी जी का रैली हो
रहा है कि आप साथ में जाएंगे मंच? हम अलग अलग जाएंगे, चलो। इससे उसकी दूरी है, इससे उसकी दूरी है। साहब, हमारी दूरी आपको चुनाव की मतगणना के दिन पता चल जाएगा। हर चुनाव का एक मिजाज होता है और हम उस मिजाज से चुनाव लड़ रहे हैं, और उस मिजाज को आप नहीं समझ पाएंगे कि हम आपको जहां दूरी दिख रही है वहां निकटता है। सबने अपना डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के द्वारा जानबूझ के फैलाई जा रही है। कोई भ्रम की स्थिति पैदा होने, पूरी तरह से जो ग्रैंड अलायंस है वो एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रहा है। महागठबंधन में सब ठीक है, तीनों दलों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। ये संघ परिवार का नया शगुफा है। उनकी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं, हमारी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं, और एक मीटिंग जो शुरू में हुई थी उसमें सोनिया जी ने, लालू जी ने, नीतीश जी ने, सब ने मिलके एक साथ पब्लिक को एड्रेस किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पब्लिक मीटिंग के अंदर सारे नेता एक साथ हों। हम लोग तो परिवर्तन रैली जो बिहार में किए पटना के गांधी मैदान में, उसमें तो हम लोग साफ झलका के हम लोग सभी महागठबंधन के नेता एकजुट हैं और एक साथ रहेंगे। वहीं भाजपा के बीच दरार है। Still with us on the program is Professor Nawal Kishore Chaudhary, political analyst. Professor Chaudhary, you know, the Grand Alliance showed tremendous unity, came out and, you know, announced the candidates together and showed the people of Bihar that they were united. But is there some kind of a discord growing within the alliance now? There is a discord. One must accept that everything is not right with the alliance. And it's very natural. You know, these parties have been different parties. Indian National Congress has been a different party, has a different politics. Naturally, you know, there are certain differences that has to be accepted. It's not without reason that Lalu ji did not go to Rahul ji rally. And it's not without reason that Rahul avoids meeting Lalu ji. It's very obvious. Let us accept it. And yet, it's a fact that they have come together against BJP and NDA, BJP-led NDA. So, there has to be some discord because these are different formations. Even you know that Nitish Kumar ji came to power by fighting against Lalu. He picked up those issues which Lalu ji was not able to address during his 15-year period as ruler. First, himself as chief minister, then his wife. The governance issue. The Jungle Raj was the term which was used by Nitish Kumar. Nitish Kumar is the man who led the team, who filed a case in further scam case. So these are realities. But another reality is circumstances have forced RJD and JDU and Congress to combine and fight unitedly against a perceived common enemy for them, that is BJP-led NDA. Same is true of NDA. NDA is also a combine of different formations. Upendra ji Kushwaha is a different formation. Ramvilas ji another combination. Majhi is there. Even though there may not be apparent discord, but internally there is always some discord. So this is a reality which both sides should accept, whatever they say. But by and large, both sides are united against their fight against each other. Let's see how people decide and whose favor. But my worry is, as I have told you earlier, let these two combine, which includes some national party like Congress, focus on larger issues of governance, development, justice, to particularly those deprived sections, including the minorities, which have been neglected, and also focus on the larger plane, the national context. That is the spirit of democracy, that is the spirit of Indian democracy, and that is the spirit of Indian constitution. But unfortunately, these rules are violated more than what I had expected. The Election Commission should take note of, and it has rightly taken note of, these issues using caste,
religion, the parochialism and hatred against communities, these issues should be dealt with formally and a free and fair poll on the sound democratic norms be ensured, and this is the mandate of the Election Commission. I am sure Election Commission will perform this time also. Democracy will triumph. Which party, which combined wins is, for me, for the matter, may not be that important, as I would like to see that democracy triumphs. The values of democratic society triumph, humanity triumphs. This is what I would expect. All right, Professor Chaudhary, we'll have to leave it at that. Thank you so much for joining us on the program there and putting things into perspective for us. Moving on now, the BJP says that its main aim in Bihar is to end what it calls is the jungle raj that the Grand Alliance will bring if it is voted to power. Our correspondent Amrita Rai spoke to BJP's Kirti Azad and this is what he had to say. Let's listen in. हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी कीर्ति आज़ाद। कीर्ति जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? मेरा तो कैंपेन मिथिला में है और 5वें फेज में है, तो अभी तो फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, जो रूठे हैं उनको मना रहे हैं। रूठे वो हैं या रूठे आप हैं? नहीं, मैं नहीं रूठा हूँ। देखिए, कुछ भी स्थिति हो, सब मिल करके निर्णय लेते हैं और वो सब करना पड़ता है। मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, देश के लिए खेला, कभी नहीं सोचा कपिल देव कैप्टन है या सुनील गावस्कर। भारत की टीम जीतनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो इस समय कैप्टन कौन है? कैप्टन तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं इस समय। जनता जनार्दन है, सदैव रही है, उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत करना हम सबों का कर्तव्य है और करते रहें। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक एक क्षेत्र से 17-17, 18-18 लोग होंगे जो चाहते हैं और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन अंततः मिलेगा तो एक ही को, तो फिर लोगों को मनाना हमारा कर्तव्य है। बाय द वे, अगर आपकी सरकार बनती भी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वह पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री इस समय विषय नहीं है, विषय यह है कि जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए हमको, तो पार्टी तय करेगी। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में किसने तय किया था? किसने तय किया था? झारखंड में, वहाँ की तो आप पूछते नहीं, हरियाणा की आप पूछते नहीं, वहाँ तो कोई तय नहीं था। तो कोई ज़रूरी है तय करके ही लड़ा जाए। अगर सब कोई एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं और आगे कौन होगा नहीं होगा वो पार्टी तय करेगी, तो उसमें गलत क्या है? चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। Well, the BJP's Shahnawaz Hussain meanwhile faced questions on the chief ministerial candidate of the party in Bihar. Here's what he told our correspondent Amrita Rai. आप ही के पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं, ये मुख्यमंत्री होगा, दलित मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री होगा, सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। इस पर क्या कहना है आपका? पार्टी में कई लोगों की राय है कि इनको होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते हैं उससे उनको हर हिंदुस्तानी एक जैसा दिखता है। उनको कोई जात, मजहब, धर्म के चश्मे से वो नहीं देखते हैं। जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया या और लोगों ने बयान दिया, उसको खारिज कर रहे हैं कि अब अभी दलित या ओबीसी या किसी और पिछड़े जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। अभी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यही बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन ये बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना बिहार में तय है। कौन सा ऐसा मुद्दा होगा या कौन सी ऐसी ताकत होगी जो बिहार की जनता को आपकी तरफ खींच कर ले आएगी? क्या मोदी जी के चेहरे के आधार पर बिहार में चुनाव होगा? तो बिहार का चेहरा कौन होगा इसकी कोई स्पष्टता नहीं होगी, तो लोग वोट दे देंगे आपको। बताएंगे ना लोगों को विश्वास है मोदी जी के चेहरे पर। तो हमारे विरोधियों को इससे कोई जलन होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का चेहरा अगर बिहार की जनता को पसंद है, यकीन है, विश्वास है, तो उनको मोदी जी के चेहरे पर ही लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी के यकीन पर, उनके काम पर वोट दे रहे हैं। और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बाद में हमने पहले तय किया। On that note, we'll slip into a short break, but much more lined up on the other side. Stay tuned, we'll be right back. The real issues which matter to the people in Bihar. Jungle Raj
versus Vikas Raj. Then why do we see, the caste arithmetic also being played around? What is politics? Politics is nothing but the reflection of the society. Why is BJP shying from announcing its chief ministerial candidate? Sir, it's a well-calibrated strategy. Watch To The Point with Union Minister Anant Kumar only on Rajya Sabha television. Welcome back. You're watching Rajya Sabha television. Well, Bhagalpur in East Bihar is one of the oldest towns of the state, but local residents are still grappling with the lack of basic facilities like better roads and cleanliness. Our correspondent Vishal Dahiya brings you this ground report from the district. A medical college named after India's first Prime Minister, a state university. Institutions that might give an impression that Bhagalpur district is well placed in the fields of health and education, at least compared to its neighbours. But people here would disagree. तो शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बदहाली को उसको सुधारना चाहिए और उसमें निरंतरता, तत्परता और सटीकता लाना चाहिए कि काम फटाफट हो सके। हमारे जो यूनिवर्सिटी में है वो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो इस कमी को दूर किया जाए और मतलब हम लोगों को अच्छे से अच्छे बुक्स अवेलेबल हों और जो हमारे डिपार्टमेंट की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। हॉस्पिटल में न तो समय पर डॉक्टर मिलते हैं, न अच्छा से दवाई मिलता है, कब आया कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ बहुत गड़बड़ है हॉस्पिटल का। स्वास्थ्य विभाग जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, न तो वहाँ हॉस्पिटल में अच्छा से भोजन मिलता है, न वहाँ देख रेख है। रोज़ जो है सो जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब जो है सो पेशेंट में मारे पीट होता है। भागलपुर में जो नीतीश कुमार जी जो बिहार के जो शासन चला रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन भागलपुर की धरती पर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लाचार हो गया है। यहाँ अस्पताल में आए दिन मारपीट, रोगियों से दुर्व्यवहार, समय पर दवा नहीं मिलना, कोई तरह का कुछ नहीं है। That's not all. For more than a decade, Bhagalpur residents have been complaining about the condition of their roads and never-ending traffic jams. No proper management of traffic, encroachment on roads and no bypass for heavy vehicles. This may sound like usual issues for any city, but the people of Bhagalpur have been forced to deal with this mess on a daily basis. And this has been going on for years now with no solution in sight, despite the promises made by political parties in every election season. For Bhagalpur residents, travelling on roads is an ordeal which they say they would rather avoid. रोड जाम रहता है, बराबर दिन भर जाम रहता है, मतलब जगह जगह पर नो नाला है, नो पानी। नाला जब बारिश पड़ता है तो पूरा लोहा पट्टी लेकर से ठौना भर पानी चलता है, मतलब रोड पूरी तरह से जाम होता है कि जो अभी जो कोई पैसेंजर जो बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाने के रास्ते में दम टूट जाएगा। उसको पुल जाम रहता है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से पैसा ले लेगा, पूरा पुल को जाम करे रहता है। केले वाला है, सेब वाला है, अब तो सब्जी की दुकान लगी वहाँ। सबसे बड़ा समस्या टाउन का जाम, आए दिन पब्लिक परेशान और जो ट्रैफिक व्यवस्था का बेहाल, इससे निजात दिलवाइए। जो भी नेता आवे इससे निजात दिलवाइए, टाउन को साफ सुथरा करवाइए और जाम से निजात दिलवाइए। But these irritants that highlight a lack of development may not have much impact on the elections. तो मुद्दों का अभाव यहाँ नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन वे मुद्दे निर्वाचक को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं हैं। वे मुद्दे चर्चा के लिए हैं, बौद्धिक विश्लेषण के लिए हैं। मतदाता उससे प्रभावित होकर उसको प्रभावकारी बनावे, राजनीति पर उन मुद्दों के प्रभाव को स्थापित करें, ऐसा आज तक किसी निर्वाचन में यहाँ नहीं। 7 seats of Bhagalpur district go to polls in the first phase on 12th of October. In 2010, the JDU and the BJP won 3 seats each. The Congress bagged 1 seat and snatched 1 more from the BJP in 2014 by poll. With camera person Prashanta, Vishal Dahiya's report from Bhagalpur for Rajya Sabha TV. Well, it is a sorry state of affairs for BD workers in Jamui district in Bihar, being the to-go destination for cheapest labour in the country. For the BD industry, people here are being exploited with very little opportunities for employment in the district. Women in most houses are employed as BD workers, risking their health to run their families.
women spend the better part of their days rolling BDs. They earn anywhere between 40 to 60 rupees a day for rolling nearly 1,000 BDs. Jamui district offers the cheapest labor when it comes to the BD industry in the country. BD factories have long shut shop in Jamui, but even then BD companies prefer this destination for cheap labor. मेरा पति कमाता, उसमें घर नहीं चल पाता, उसी मजबूरी वजह से थोड़ा हम भी सहारा करते हैं उनको बीड़ी बना के। क्यों उनको रोजगार क्यों नहीं मिला है? मजदूरी कमाते, कोई दिन मिलता है कोई दिन नहीं मिलता है, इसी वजह से। कितना पैसा मिलता है? 60 रुपया 1000 भी नहीं बनाने में। हाँ, रोजगार बोलेंगे सरकार को देने के लिए। There are about 15,000 women involved in the BD industry here. Unemployment is a big issue, and the BD industry that comes with its share of health hazards and economic exploitation is the only way out for the women to make ends meet. आँख ना उतना मालूम आपदा है, तब यो मजबूरी बच्चा बुतरू के चलती से, पेट के चलती से, देह में सुख ना, सब मन सही शरीर नहीं रहा है तो बनावा नहीं पा रहा है। There are no industries here that can sustain a population of 17 lakh people. The youth are forced to move out for better prospects. The JDU won 4 seats in the district in 2010. Though it was an alliance partner of the JDU, the BJP is now blaming its ally turned foe for the massive unemployment. मेरे सारे साथी बाहर नौकरी करने के लिए चले गए और हम लोग जो पढ़े लिखे हुए भी हैं, इंटर तक किए हुए हैं, और हम लोग का कोई व्यवसाय भी नहीं है, अपना मजदूरी और करते हैं, उसी से हम लोग का घर परिवार चलता। रोजगार का कोई यहाँ कोई साधन है ही नहीं, न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई ऐसा ऑफिसेज है। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ लिख लेते हैं तो रोजगार के लिए भी बाहर, चाहे बंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, जाते हैं। Promises are being made once again to turn things around for Jamui. But despite several ones earlier, ground realities remain unchanged. With inputs from Pranav Goswami, Bureau Report, Rajya Sabha TV. And before we wrap up the bulletin, we leave you with the election song of Lalu Yadav's RJD. See you again next time. कि महुआ से तेज परताप हो, आ जोड़ी के दोनों हाथ हो, आ महुआ से तेज परताप हो, जोड़ी के दोनों हाथ हो, तब वोट मांगे अइले अपना गैया आमा जी, आ परतारे सब कर पैया आमा जी, नारी महतारी के राखेले ख्याल हो, आ बड़ी निक नेता हमेरा बड़ी के लाल हो, आ नारी महतारी के राखेले ख्याल हो, आ बड़ी निक नेता हमें लालू जी के लाल हो, तो हमनी खाती लड़ी है लड़ाई आए आमा जी, तब वोट मांगे अइले अपना गैया आमा जी।